Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. I hope you're all well. Today I've got this Barbie pink makeup look for you guys. So this is when the trend of Barbie makeup was around, and I did this a few weeks ago. So I thought I'll show you how I created this. So obviously the concept was Barbie, but it can be used for anything really. So आज मैं आपके लिए ये बार्बी मेकअप लेके आई हूँ. बार्बी मूवी निकली थी, ये ट्रेंड चला हुआ था, तो उस टाइम पे मैंने ये किया था. तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ कि कैसे मैंने ये किया था. सो आईब्रोज मैं शुरू कर रही हूँ ब्राउ वैक्स से. ये बेनिफिट का है, ये इतना ज़्यादा स्टिकी नहीं है जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स कुछ होते हैं. तो इसको 2 दफ़ा मैंने किया था एंड देन यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ करके इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूँगी एंड देन पी लुइस का बेस यूज़ करके आइज़ को सेट कर दूँगी. So I went in with my Benefit brow wax. So that's not as sticky as some of the ones that I use. So the Be Perfect one is really sticky. So this one I went over twice and then I filled in the gaps with a little pencil from Benefit as well. And then now I'm just going in with my P. Louise base and setting the eyes. So as usual, I'm going on the base and I'm carving out the top and the bottoms of the eyebrows for this look. So it's important just to pat away any extra concealer you've got there and make sure everything is just blended out at the outer corners as well, because you don't want the product to be sticky. Now I went in with a gel, a creamy blusher. So this was a cream formula, so I added this on first and I'm tapping this on. So this will give me extra depth of the pink that I wanted. I really wanted that to pop. So you can skip this step if you want to. You can just go in with your pinks as well. But I added this on and I'm just blending it out, and then I will go over it with some pink eyeshadow as well. So क्योंकि मैंने पिंक करना था और मेरा दिल था कि एक्स्ट्रा पॉप हो ये कलर, सो मैंने नीचे एक क्रीम ब्लशर यूज़ किया है पिंक उसी कलर का जो मैंने लगाना था. सो पर टैपिंग मोशन से इसको लगा रही हूँ एंड देन आहिस्ता आहिस्ता इसको साथ साथ ब्लेंड भी की जा रही हूँ. ये ऑब्वियसली सेट नहीं होता. फिर इसके ऊपर मैं अपना पिंक जो है आई शेडो वो लगा दूँगी. इनर कॉर्नर्स पे अगेन मैंने वाइट यूज़ करना था, तो मैंने कहा वाइट को थोड़ा सा पॉप करने के लिए पहले एक वाइट बेस लगा लेते हैं एंड देन आई शेडो. So same concept with the white as well. I wanted the white to pop, so your whites don't always pop on the eyes, so I added in a white base. This is from P. Louise. And then I'm just blending both colours in, making sure that everything is blended out, and then I'll go in with my powders. So यहाँ पे बस मैं दोनों कलर्स को थोड़ा सा ब्लेंड किए जा रही हूँ एंड देन अपना जो पाउडर आई शेडो है जो पिंक वाला है उसके साथ शुरू करूँगी. टैपिंग मोशन से लगाऊंगी पहले क्योंकि नीचे कंसीलर भी वेट था एंड ऑब्वियसली जो ब्लशर है वो भी वेट था. सो आहिस्ता आहिस्ता अपने कलर को बिल्डअप कर दूँगी. So I've gone in with my powder. So this is from Jacqueline Hill Volume 2 palette, and what I've done is just got a little bit of that deep pink colour and started tapping it on the eye. So obviously the concealer base was wet and the cream blusher is wet. So I went in with a bit of shadow first, adding my colour on, and then I'm going slightly heavier now to get that pop of colour. So I'm keeping this colour to the outer corners of the eyes, and then I'm going to go in with my white. So this is from P. Louise's Wedding Wish palette, and I'm just going to stamp this on the inner corners and make sure that I get the colour payoff that I want. तो यहाँ पे मैंने अभी वाइट बेस वाइट आई शेडो लिया है अपने पी लुइस के पैलेट से. तो इसको टैपिंग मोशन से लगा के 2-3 दफ़ा मैंने ये लगाया था क्योंकि वाइट बेस जो है इतना नज़र नहीं आता हमेशा. सो टैप करके जब तक मैं खुश नहीं थी कि इसका जो कलर पे ऑफ है तब तक मैं लगाती गई हूँ एंड देन इन दोनों कलर्स को थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया. So I added it on until I was happy with the amount of white that I had, and then I'm just blending the two colours together so that, you know, I've got a bit more pink showing. Highlighted the brow bone with my Doll Beauty highlighter. So यहाँ पे बस थोड़ा सा brow bone को highlight कर रही हूँ जो Doll Beauty का highlighter है उसके साथ. And then यहाँ पे मैंने एक glitter लगाया था, ये MAC का Dazzle liquid है. So इसका जो कलर है ना, ये मतलब white पे लगाऊंगी तो थोड़ा सा different आएगा, pink पे लगाऊंगी तो थोड़ा सा इसमें pink shades आ जाते हैं, blue पे लगाती हूँ थोड़ा सा bluey green आ जाता है. So it's really nice actually. तो यहाँ पे मैंने बस 2 दफ़ा इसको लगाया था कि इसका effect आ जाए. So I've used this MAC liquid shadow here, and I used this twice. I applied it twice just to get that shimmery effect. Now I love this colour because it actually shows up differently on different shadows bases. So because I'm using it on white, this is what it looks like. I've used it before on pinks where it showed a little bit purpley and a bit greeny, and on blue shadows it's gone a bit greeny and purpley as well. So it just reflects very differently. So obviously I was going for a
eyeliner look here. So what I'm doing here is just adding on a quick baseline just to the tip of the eye really. I'm not doing my proper eyeliner here, and then once I've got my lashes on, I'm going to go in with my liquid liner, my gel liner as well. तो यहाँ पे मैंने बेस पे एक आईलाइनर बस लगा दिया है, जल्दी से लिक्विड पेन से ही लगाया है, एंड देन काशीज़ का जो जेल लाइनर है वाटर लाइन पे लगा रही हूँ, इससे आईज जो हैं ज़्यादा ओपन लगेंगी. So by adding a nude or white gel liner, it just opens up the eyes a lot more. So that's why I've gone for white. Sometimes can be a little bit scary, so I like using nude. So I've done my skin prep, and then I'm going to go in with my foundation. तो यहाँ पे थोड़ी बहुत जो स्किन प्रेप करती हूँ वो करूँगी. एल्फ का ये पटी प्राइमर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड देन अपनी जो फाउंडेशन है वो शुरू कर दूँगी. So when you're adding your primer, just make sure that you're really pressing it into the skin and using circular motions to actually get that really set on the skin. So now I'm going in with my Inglot gel liner, and I'm using like a thin eyeliner brush and really taking my time. So because it was all about the eyeliner, I really wanted to take my time and do this before the base was actually done. So now I've got my eyelashes on, gives me an idea. So what I'm doing is very gently and taking my time, pulling out the tip, going thicker where I need to, and making sure that your client or your model is opening her eyes so you can see what it looks like when her eyes are actually open. And then slowly I'm pulling out and extending the tip. So यहाँ पे liquid gel liner इस्तेमाल कर रही हूँ, आंखें बंद है obviously. यहाँ पे lashes लगा दी थी, ऐसा इसकी थिकनेस एंड इसकी लेंथ की जा रही हूँ. आइज़ खोल के आपने चेक करना है कि कैसे लग रहा है, एंड देन उसके हिसाब से मैं इसका जो विंग है उसको ज़्यादा की जा रही हूँ. तो दोनों आइज़ को आपने ऐसा कर लेना है. मैंने कहा बेस से पहले ये कर देती हूँ. थोड़ा सा कलर करेक्शन किया अपना जो फाउंडेशन पैलेट है जो मेकअप फॉरएवर का है, एंड वेरी लाइटली मैंने यहाँ पे कलर करेक्शन की थी. So I'm just colour correcting with the Makeup Forever palette. So I've gone in with a slightly lighter colour. It's just got a slightly peachy undertone to it, so it just colour corrects nicely. So it just depends on the colour of my skin that I'm working on, of what tone I'm going to use. So I'm going in with MAC Studio Fix this time. It's the only foundation I'm using. I'm not actually mixing any different foundation, but I did mix two tones. So I actually started off with a slightly darker colour. So this was very, in reality when I was looking at it, it was a little bit dark for it. But if you want to go lighter, I think the best way to do it is you apply something which is slightly darker or just your shade, and then you can add on another layer of a slightly lighter colour if you want to. So I've done a very thin layer. I'm not using a lot of foundation at all. Tapping that on, going to use my beauty blender, and then going with my second layer of foundation. So that's how you would actually layer up. So यहाँ पे मैंने MAC की फाउंडेशन यूज़ किया. ये कलर जो यूज़ किया थोड़ा सा डार्क था. रियलिटी में भी जब मैं देख रही थी थोड़ा सा येलोवी टोन आ रहा था. तो इसको लेयर करने के लिए पहले मैंने एक थिन फाउंडेशन का लेयर लगाया, उसको ब्यूटी ब्लेंडर से सही तरह ब्लेंड कर दिया, एंड देन एक लाइटर शेड यूज़ करके थिन लेयर अगेन इसको लगा के एंड मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी. तो अगर आपने लेयरिंग करनी है फाउंडेशन को तो ऐसे ही आप करेंगे. एकदम आपने वेट पे के ऊपर वेट नहीं लगा देना. आपने पहले एक बेस को सेट करना है एंड देन दूसरा बेस आप यूज़ कर सकते हो. टैपिंग मोशन से ब्यूटी ब्लेंडर से ऑब्वियसली इसको टैप करके तो सही तरह ब्लेंड कर दिया. So I'm just making sure everything is blended away with my damp beauty blender now, tapping away, really taking my time and making sure everything is pressed in. Now for the under eyes, I've gone in with my Tarte concealer, but what I wanted to do was I wanted that really bright eye, like I wanted it slightly more brighter. So I've gone in with like my P. Louise white base on the inner corners of the eyes, and I've done this a few times in some of my videos, and then on the outer corners I'm adding my normal Tarte concealer, so in a slightly lighter shade but it's not white, and then when I blend everything out it all kind of like marries together. So I'm highlighting the centre of the face as usual, and then I'm going to go into my contour. So यहाँ पे मैंने अंडर आइज़ को हाईलाइट करना था, तो पहले मैंने अपना थोड़ा सा इनर कॉर्नर्स पे अपना वाइट बेस जो पी. लुइस का है वो यूज़ किया, एंड देन साथ मैंने अपना कंसीलर लगा दिया. जब मैं इसको ब्लेंड करूँगी तो सारा ब्लेंड हो जाएगा टुगेदर, एंड थोड़ी सी जो लाइटनेस है वो इनर कॉर्नर्स पे रह जाएगी. सो ब्रश के साथ मैं इसको ब्लेंड करती हूँ. टैपिंग मोशन से कर रही हूँ. आपने बहुत टाइम लगा के ये करना है, और आपको जो ब्रश है वो थोड़ा सा मतलब इतना फ्लफ़ी नहीं होना चाहिए. मतलब ये फ्लफ़ी भी है लेकिन थोड़ा सा डेंस भी है, अपनी शेप होल्ड करता है. तो आपने प्रेस करके अपना ये जो कंसीलर है सारा टाइम लगा के, यहाँ पे बहुत टाइम लगता है, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड करते जाए.
So I'm using like a dense fluffy brush here, so you don't want it to be too fluffy, it needs to be holding its shape. And I'm pressing in the product here, so I'm not moving it around, I'm just tapping in. I've given it a few minutes before where it was sat on the skin, and now what I'm doing is just tapping it in, and just take your time here and make sure everything is blended out. Once I've done that, I'm just going in with a little bit of concealer from Too Faced, and I'm just adding this in for the contour. I like using this product, I think it's really nice. So contour के लिए मैंने थोड़ा सा concealer लिया है dark shade में, और उसके साथ मैं contouring करूँगी. So I'm using a small brush just to contour down the center of my nose and making sure that that contour color is blended out. And then I'm just going to add a small amount of concealer again, and just to highlight the tip of the nose. So एक small brush से मैंने ये जो contour है उसको blend कर दिया, and then center of the nose में थोड़ा सा concealer लगाऊंगी कि थोड़ा सा tip of the जो nose है वो थोड़ी सी highlight हो जाए. And इसको आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं blend कर दूंगी. So I'm using a small brush here just so that I've got a little bit more control. So on the cheeks I went in with the very first blusher that I used on the eyes. So this was a very pink colour, and obviously this was a very pinky look that we were going for, slightly over the top pink look. So I'm adding this onto the cheekbones, and then I'm going to blend this away and add like a pink powder blush as well. So जेल का जो ब्लशर मैंने आईज पे यूज़ किया था वो मैंने अभी यहाँ पे लगा दिया था. अब ये जो लुक हम कर रहे थे एक ओवर द टॉप थोड़ा सा पिंक बहुत ज़्यादा ओवर वाला था, सो इसलिए मैंने इतना डीप पिंक यूज़ किया. एंड देन सेट करने से पहले सारा कुछ मैंने जो कंसीलर है उसको ब्लशर के अंदर सारा फिर अभी ब्लेंड की जा रही हूँ. So I've added my blusher on, and what I'm doing now is just making sure that obviously all the harsh lines and all the concealer is all blending out nicely. Going in with some loose powder just to set the eyes and the center of the face a little bit before I go in to bake with my Huda Beauty loose powder. So बेकिंग से पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लूज़ पाउडर अप्लाई कर दिया, ज़्यादा नहीं किया है, बस थोड़ा सा अमाउंट है ब्रश के साथ ऐड कर दिया. एंड देन यहाँ पे मैं अपनी जो बेकिंग है वो करूँगी, एंड ये हुडा ब्यूटी का पाउडर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ. All these steps that you do make your base long lasting and a lot more flawless, so they are quite important steps. So underneath the eyes I'm blending it out. I've went in with like a dark purpley shade first to give that intensity, and then I'm going to blend this out with the brighter pink colour. So यहाँ पे मैंने एक deep थोड़ा सा purpley shade यूज़ किया eyes के नीचे, and then जो bright pink है उसके साथ इसको blend की जा रही हूँ. And once everything's done underneath the eyes, I'm going in with my Charlotte Tilbury powder and then blending away all the extra powder that I had. So I'm pressing this actually into the skin. If you note my movements, I'm using like a dense powder brush, and I'm pressing everything in, and then once I've pressed it in, that's when I start kind of like buffing away a little bit as well. So just going in with a powder blush now as well, just to highlight that blusher even more. So पाउडरिंग हमने कर लिया, एंड नाउ यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर ब्रश लगा रही हूँ. इसका कलर I'm sorry डॉल ब्यूटी का है, लेकिन I'm not sure कि कौन सा शेड है. एंड देन डॉल ब्यूटी का ही हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है. ये टू फेस की लिक्विड लिपस्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ. इसको थोड़ा सा शेड मुझे थोड़ा सा कम, मुझे मतलब ज़्यादा पिंक लग रहा था, तो उसको थोड़ा सा एक न्यूड शेड लगा के थोड़ा सा न्यूट्रल कर दिया था. So I went in with the Too Faced lipstick, and then I just made it was a little bit still too pink for me, with obviously so much pink going on. So I did add a little bit of like a nude shade and muted it out a little bit. So then we went in with a little bit of mascara just to define the lashes.
And pretty much this was your final look. So obviously we can tone this down, it can be used for other events as well, but this was my Barbie look. I hope you've enjoyed this tutorial. I hope आप guys को ये tutorial पसंद आया. We then went on and obviously added on, I did her hair and things like that just for the particular Barbie look that I was doing, and this is what it turned out like. So I hope you've enjoyed this video. Please do leave me a like and a comment, and inshallah I will see you soon. Take care, Allah Hafiz.